Good morning, children. Hope you all are fine and doing well. Children, today you will learn nouns in its singular form and in plural form. We have learned this in class 2 as one and many. One means singular noun and many means more than a plural noun. Okay? Previously, you were given some nouns and their plurals. You learned it and you did it. But in class 3, you will learn how you change the singular nouns into plural by adding s, es, ies, ves, so many. So when we change singular noun to plural, we make some changes in the spelling. This is what you are going to learn in lesson 3, nouns, numbers. Okay, so let's start. So children, let's start lesson 3, nouns, numbers. Nouns, number. Number means singular noun, plural noun. Okay, you can call it one noun or and more than one noun. Followed. So number means singular and plural. Singular noun, plural noun. Singular noun means one and plural noun means many, which you have learned in class 2. Okay. For example, if I say one boy, it's a singular noun. Okay. And many boys, so it's a boys is a plural noun. So there are so many nouns, when we add s to it, it becomes plural. But it's not necessary that to all the nouns if you add s it will be plural. There are some changes which you have to learn. Alright? So let's start. See here. You know that most nouns can have two forms. Two forms means singular form and plural form. See, one form to show that the noun refers to one thing. Refers to one thing. Animal or person. The noun is then said to be in the singular number. Example, a is a singular. When we talk of one thing, we put a, or if there is a vowel, we put an. So a bole to one. Followed. So a table, a hand, a horse, a man. Here a means one. Okay. Now come to the second point. A second form to show that the noun refers to more than one or many things, animals or persons. The noun is then said to be in the plural form, plural number. Okay. Example, 3 tables. It's more than one, so see s is there. If it is more than one, s is put, but there are difference according to the rule. 3 tables, many hands, some horses, few means thode se. Number is not given, but few means kuch. Few, but few doesn't mean one, so it is plural. Few men. See the change in the spelling. All the nouns are, when they are becoming plural, s is added. But here, one man, here it is given. See, a man. But when it is plural, it is men. So you will see that so many changes are there in the example. in the spellings. Okay, so you have to be very particular, children, when you
change singular to plural, that there is a change in the spelling. All right. Now C point. What is the third point? However, some nouns have the same form to show both one and many. अब कुछ nouns में कोई change नहीं होता है, one में भी वही होते हैं and many में भी बहुत होते, मतलब singular में भी वही spelling होगी, वही word होगा and plural में भी. देखो example क्या है, a sheep, many sheep, ऐसा नहीं लगता है, बोलो a sheep, many sheep. An aircraft, many aircraft. See, here is a vowel, that is why they have used an. So an means is used for one only. So an aircraft, many aircraft. A deer, deer means heron. A deer, 10 deer. ऐसा नहीं लगा है. So you have to learn all this, okay? Now the following nouns do not have any plural. मतलब कि ये जो nouns हैं इनका कोई plural form नहीं होता है. जब इनको singular में भी equipment use करेंगे और जब बहुत सारे equipment होंगे तो भी equipment ही बोलेंगे. Will not call them equipments. Okay? See, these are the nouns which do not have to change any when it becomes plural. Equipment, apparatus, furniture, music. All right, this is very important. You keep this in your mind, okay? What are these? Equipment, apparatus, furniture, music. Followed? So you've seen a means one, an means one, a table, a hand is a singular form, 3 tables, few tables, many tables, these are the plural form. Then there are some nouns, when they are changed into, their form is changed from singular to plural, there is no change in the spelling, no s is added, nothing is done like that. It is written as it is. And there are few nouns when they do not have any plural. When they are used for plural, spelling will be the same. This much is clear, I think. Now come, how you will change singular to plural. This is very important and this you have to learn. See carefully. This may be asked like this in the exam. Change the number of the given nouns. If it is in the singular form, you'll have to change it into plural. And if it is given in the plural form, you'll have to change it into singular. The question can be asked like, change the number. Can be asked like this also. Alright, now see what you have to do here. Singular to plural. Given below are some of the ways in which the number of a noun may be changed from the singular to the plural. Now see, point 1. Usually we simply add s to the singular and it becomes plural. See here, crow, s is added, it is crows. This is singular, this is plural. This is one, this is many. ये एक वचन है, ये बहुवचन है. Same here, leg, legs. Week, weeks, weeks, हफ्ते. Month, months. Simply s is added to it. Alright? And see here under the second point. See, when you are changing from singular to plural, जरूरी नहीं है कि खाली s लगा दिया और plural हो गया. नहीं. देखो आगे क्या बताया है. कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कि es लगाया जाता है. जैसे we add es to singular nouns ending in ch, sh, s, double s और x. आप समझ में आया? जब सिंगुलर नाउन के एंड में क्या होगा? ch होगा, sh होगा, s होगा, डबल एस होगा या x होगा, तो हम क्या लगाएंगे? es लगाते. देखो एग्जाम्पल सी, मैच एंडिंग विथ ch, मैच
matches. Gas, ending with s, gas, gases. Box, boxes. Bush, bushes. Glass, glasses. Fox, foxes. So when you see the word, before changing it you have to see if singular से plural करना है, अगर वो CH से end हो रहा है, SH से end हो रहा है, S से end हो रहा है, डबल S से end हो रहा है और X से end हो रहा है, तो क्या लगेगा? ES add हो जाएगा. Follow? Now come to the third point. So many points are there. When the nouns ends in Y, we drop the Y. Drop the Y means Y हटा देते हैं प्लूरल बनाते समय और क्या ऐड करते हैं? And add IES. See again, जब नाउन के एंड में Y होता है तो Y को हटा देते हैं प्लूरल बनाने में और क्या ऐड कर देते हैं? IES. देखो जैसे बेबी, बेबी इज एंडिंग विद Y, Y भाग गया और क्या ऐड हो गया? IES, babies. So baby, babies. So you have to keep this in mind कि अगर कोई नाउन Y से एंड हो रहा है, उसको प्लूरल करना है, तो क्या करेंगे? Y हटा के IES ऐड करेंगे. Fairy, fairies. Fly, flies. Lorry, lorries. Lady, ladies. Curry, curries. These are the examples. Now see another point. अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि खाली Y देख के तुरंत IES नहीं लगा देंगे. एक चीज़ और ध्यान में देना है. वो क्या है कि जब Y से पहले अगर वॉवल, you know what are the vowels? Vowels are A, E, I, O and U. ये वॉवल्स हैं. अगर Y से पहले इसमें से कुछ है तो क्या करेंगे? IES नहीं लगाएंगे, सिंपल S लगा देंगे, खाली S लगा देंगे. Y भागेगा भी नहीं, Y हटेगा भी नहीं और S ऐड हो जाएगा. देखो ध्यान से. रेज, ये देखो वॉवल है तो रेज हो गया. रे, रेज. ट्रे, ट्रेज. बॉय, बॉयज. डे, डेज. की, keys. Toy, toys. Alright? So all these rules you have to remember. Now number 4. What is the fourth point? When a noun ends in F or FE, we drop the F or FE and add VES. अब ध्यान से सुनो. जब एंड में, नाउन के एंड में F होगा या FE होगा तो वो दोनों ड्रॉप कर देंगे और प्लूरल बनाते समय ऐड कर देंगे VES. एग्जाम्पल देखो. हाफ, लास्ट में F लगा है, F हट गया और क्या ऐड हुआ? हाव्स. हाफ, हाव्स. नाइफ, देखो FE है, FE is gone, removed and VES is added. So knife is a singular form and knives is a plural form. Leaf, leaves. Patti, pattiyan. Alright? So F is gone, V is added. Thief, thieves. Life, lives. FE और F अगर होगा तो हटा के क्या ऐड होता है? VES. Wolf, wolves. Now next point. But we simply add S to some nouns ending in F or FE. अब वही बात हो गई Y के साथ. अगर वॉवल के बाद F है तो F नहीं हटेगा, खाली S ऐड हो जाएगा, जैसे हम लोग ने यहाँ पे Y वाले नाउन्स के साथ किया था. यहाँ देखो. रूफ, रूफ्स. वॉवल के बाद F है तो सिंपल S लग जाएगा. क्लिफ, क्लिफ्स. चीफ,
chiefs. Save, saves. ठीक है. Now see another point. To some nouns ending in f, f से जो end होता है, we can add ves or s. That noun has two plural forms. अब देखो ऊपर हम लोग ने f वाला पढ़ा था ना, तो अगर ऐसा आता है, कोई कोई नाउन्स ऐसे होते हैं कि उसमें खाली f भी लगा सकते हैं, s लगा के उसमें f सेंड हो रहा है तो खाली s भी लगा सकते हैं, या वी एस दोनों करेक्ट माना जाएगा. जैसे ड्रॉफ, ड्रॉफ्स, ड्रॉव्स, ड्रॉफ्स. देखो ड्रॉफ का प्लूरल क्या होगा? ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट्स, ड्वार्व्स. हूफ का प्लूरल हो गया हूफ्स भी है, ठीक, एंड हूव्स इज ऑल्सो करेक्ट. स्कार्फ, स्कार्फ्स, स्कार्फ्स. हैंडकरचिफ, handkerchiefs is also correct, and handkerchiefs is also correct. Now to some noun ending in o we simply add s. अब जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो o से एंड होते हैं उसमें सिंपल s लगा देते हैं. लाइक किलो, किलोज. फोटो, फोटोज. स्टीरियो, स्टीरियोज. रेडियो, रेडियोज. पियानो, पियानोज. शैम्पू, शैम्पूज. लेकिन अब देखो कुछ और भी है. बट टू सम नाउन्स एंडिंग इन ओ वी हैव टू ऐड es. अब कुछ नाउन्स हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है कि जो o से एंड होते हैं लेकिन उसमें खाली s नहीं लगता है. जैसे पटेटो, पटेटोज. टमेटो, टमेटोज. हीरो, हीरोज. इको, इकोज. ऑलराइट. Zero, zeros. So these you have to learn, children. All right. Kuch, all these you learn it. Now see, to some nouns ending in o we can add s also and es also. अब देखो कुछ nouns ऐसे हैं जिसमें s भी लगा दोगे तो भी सही होगा और es लगाओगे तो भी सही होगा. जैसे volcano, volcano का प्लूरल volcanoes, volcanoes दोनों हो सकता है. बफेलो, बफेलोज, और es भी लग के बफेलोज हो जाएगा. मोटो, मोटोज. कार्गो, कार्गोज. दोनों तरह से ही करेक्ट हो सकता है. ऑलराइट. सो दीज ऑल दीज सिंगुलर प्लूरल बेटा लर्न इट वेरी नाइसली. ओके. नियम तो आपको याद रहना चाहिए बट यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो. ओके. यू आर स्मॉल चिल्ड्रन. नाउ कम टू टर्न द पेज. Come to 16, page number 16. Now see what is given. In the case of some nouns, we form the plural by adding en. कुछ नाउन के ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म को चेंज करने के लिए फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल en लगा देते हैं. जैसे देखो वेरी इंपॉर्टेंट. चाइल्ड होता है वन चाइल्ड, you all write many childs. It's wrong. क्या हो जाएगा? One child, many children. Two children, few children. Five children. So one child, many children. Ox, oxen. One ox, many oxen. Six oxen, two oxen. More than one ox, many oxen. Brother, brethren. Brother spelling is totally different and these are very important. जरूर आता है. So remember it. Brother plural is brethren. अब देखो 7th point क्या है? Some nouns form their plurals a little differently. एकदम different होते हैं. अभी जैसे मैंने man और men का बताया था ना, उसी तरह ये भी है. देखो very different. न s वाला लफड़ा है, न en वाला चक्कर है, न y वाला चक्कर है. Totally different. So this portion, this you have to cram it, learn it very nicely. Foot, feet. Mouse, mice. Man, men. Goose, geese. Tooth, teeth. Woman, women. क्या कहते हैं उसको? Women, women.
So these are very important. You have to learn it very nicely, and then this is the exercise. You will do it, and I'll send and check from the file attached. All right, that's the end of the lesson.